Assalamu alaikum students. Welcome to the 16th lecture of Artificial Intelligence. I hope you are fine and enjoying these video lecture series of Artificial Intelligence. I am Muhammad Umar Farooq, lecturer Computer Sciences, University of Education, Lahore. So we are covering the local search technique. In our previous lecture we talked about the hill climbing search method, which belongs to local search technique. In this video lecture I will discuss beam search, and we also solve different problems by using this search technique. So in our previous lecture we solved this problem. The initial state is S and the goal state is M. We saw, and these values are heuristic values for each node, and we solved this problem by using the hill climbing search technique. We also discussed the we also solved the 8 puzzle problem by using the hill climbing, and the initial state is here and final state is here. We use the heuristic values to solve this problem, which is the number of misplaced tile, and this heuristic value is an admissible heuristic. So we solved this problem by using the hill climbing problem, and we watched the behavior of local maxima and local minima when we solved this problem. So there are 3 different weaknesses of a hill climbing search technique. First is local maxima and local minima, and the local maxima is a state which is better than all of its neighbors but not better than some other states which is not directly connected to that state. So in the same way, the second problem is plateau problem. So a flat area of the search space in which all neighboring states have same values. In the same way, the third problem, bridge problem, the creating a sequence of local maxima, but all of them are not directly connected. So हमने 3 ये देखी थी local maxima कि वो उसके नियर बाय जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे उससे उससे अच्छे नहीं होते, उससे हाइट को कह लें कि वो गेन नहीं कर रहे होते, लेकिन जो है वो उसका कोई और दूसरी जगह पे एक पॉइंट है जो कि उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो क्या होता है, वो उससे ज़्यादा अच्छा पॉइंट होता है और वो अपने आप को कंसीडर करता है कि मैं मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर पहुंच गया हूँ। प्लेटियो प्रॉब्लम क्या है कि फ्लैट सरफेस आ जाती है। हमने एल्गोरिदम की बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट द एल्गोरिदम कि हमारे पास किस तरह से नई स्टेट्स जो है वो अपडेट होती है। सो इन द सेम वे वी टॉक्ड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग वीकनेसेस, that there are 2 different solutions to solve this weaknesses जो कि मैंने डिस्कस की थी. फर्स्ट इज रैंडम initialization of starting states. So we can randomly initialize multiple times. हम क्या करते हैं, हम multiple initialization कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारे पास बेस्ट आंसर आता है. In the same way we can use the jump solution कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम solution jump कर सकते हैं उसके to overcome this problem. The local minima, इसी तरह से flat area problem जो है वो हमारे पास जो आती है. So in this video lecture I will discuss the beam search, which is the second search algorithm which belongs to the local search algorithm. So beam search, what is the beam search? Beam search is a type of local search. We talked about this concept in our previous lectures, that local search in which we explore only a current state instead of exploring the complete path from initial state to goal state. So we talked about this concept that in our previous lecture. The beam search is the second type of local search. So it keeps the track of k states rather than just one. So in our hill climbing search technique हम क्या करते थे, हम just एक ही path को, एक ही track को हम explore करते थे. But the beam search technique explore or keeps the k tracks. K will be 2, 3 or any value which is greater than 1. So for a hill climbing the k will be equal to 1. So अब ये क्या करेगी, ये बजाय इसके कि एक पाथ को एक्सप्लोर करेगी, मल्टीपल पाथ को लेके चलेगी, मल्टीपल ट्रैक को लेके चलेगी. फॉर एग्जांपल एट आवर इनिशियल स्टेट इट विल एक्सप्लोर both of these nodes, and in the same way हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल जो भी आएंगे उनमें से जो 2 हमारे पास एक्सप्लोर करेगी if the value of k is 2.
So the third point is that the successors of all k states are generated. So we will generate the k states we will generate the all successors of k states, and if anyone is a goal state, the algorithm halts. तो अगर हमारे पास जो गोल स्टेट आ जाती है तो हम वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, अदरवाइज it selects the k best successors from the complete list and repeats. तो क्या करेगी कि हमारे पास जो है वो जो बेस्ट नेक्स्ट लेवल के ऊपर हमारे पास बेस्ट नोड आती हैं उनको ये पिक कर लेता है. हम इसको भी देखेंगे हम अपनी एग्जांपल्स के अंदर किस तरह से वो पिक करता है. So the third point is that the fourth point is that beam search overcome the weaknesses of hill climbing search. So what are the weaknesses? We discussed that the local maxima, local minima, plateau problem and ridge problem. So how it overcome these weaknesses? First of all, by using the value of k is equal to 2 or 3. So if the heuristic वैल्यू हमारे पास जो है वो गलत बता दी जाए एक जगह पे तो अगली जगह पे वो क्या हो जाएगा, दूसरा पाथ हमारे पास ठीक होता है. इन द सेम वे द सेकंड रीजन इज दैट इट पिक द बेस्ट नोड्स. सो ये हमारे पास जो है वो जो करंट सिनेरियो होता है उसके ऊपर कंपेयर नहीं करता बल्कि जो भी बेस्ट आती हैं उनको पिक कर लेता है. फॉर एग्जांपल इफ द वैल्यू ऑफ द सक्सेसर the heuristic value for C, D and E is greater than 9, so it will pick the best value. For example, it have the 10, 11 and 12. So ये क्या करेगा, ये बजाय इसके कि वहाँ पे रुक जाए कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पोजीशन पे आ गया हूँ, ये बजाय इसके कि वहाँ पे रुक जाए तो ये क्या करेगा, ये 10th वाली वैल्यू को पिक कर लेगा which is the best value among all of these three nodes. So the last point is that it will also use the heuristic values. So what is the heuristic values? That it is the estimated guess from our from any state to goal state. So these are the heuristic values for this problem. That the heuristic value for A is 9, heuristic value for B is 11. So the estimated guess to reach from A state to goal state is 9. हमारे पास ये जो है हमारे पास ये heuristic values हमारे पास आती हैं. So now I will solve this problem that the initial state is S. I will move from this S state to goal state by using these heuristic values, and the value of k is 2. I will solve this problem by using the beam search. So the value of beam, इसको beam भी कहते हैं कि वैल्यू ऑफ बीम हमारे पास क्या है, वो क्या है, वो मेरे पास 2 है. So S is our initial state. I mark the red color over here to represent that I have visited this node and there are 2 child nodes. So मेरे पास जो है वो I have 2 successors for S node. So then I will visit both of these nodes because the k value k is equal to 2. So हमारे पास जो है वो I will visit both of these nodes. So just look at the next slide that I visit both of these nodes and mark the red color over here to represent that I have visited this node and check whether it is a goal or not. अगर यहाँ पे गोल होता तो मैं इसको हार्ड कर लेता एल्गोरिथम को, हमारे पास ये गोल स्टेट नहीं आई, then मैं क्या करता हूँ इसको, then I will generate the successor node for these states. So then I generate the next states for this for these 2 states जो कि गोल नहीं है. then क्या करूँगा मैं, I will pick the best 2 successors. So best 2, why the value of why I pick the 2 successors, because the value of k is 2. क्योंकि हमारे पास जो एल्गोरिथम है, हमारे पास जो बीम सर्च है वो क्या करती है, हमारे पास 2 ट्रैक को लेके चलती है, 2 या मल्टीपल ट्रैक को लेके चलती है जो कि वैल्यू जिसको हमारे पास जो k की वैल्यू होती है उसके हिसाब से. So I will pick the 2 best node. So which are the best 2 nodes? So the F have the value of heuristic value 7.1 and C have the heuristic value of 7.3. In the same way for D, G and G, all of these values are greater. So as compared to F and C, then I will pick these 2 nodes. So just I visit
I will visit these two nodes which have the heuristic values of heuristic value 7.1 and 7.3. Then I will check whether both of these nodes are the goal state or not. Then क्या करूँगा, मैं इसको जनरेट किया मैंने इसको नेक्स्ट स्टेट्स को. So then जो भी नेक्स्ट स्टेट्स हैं I will check all of these nodes that whether क्या है कि इसमें से कोई गोल स्टेट है या नहीं है. So then I will pick, क्योंकि अब इसमें से कोई गोल नहीं है, then I will pick the two best nodes. So why the value of why I will pick the two nodes, because the value of k is 2. So I will pick the node k and I, because both of these nodes have the heuristic values 5.3 and 5. So मैं क्या किया, मैंने इन दोनों को पिक कर लिया और then I will generate the next states, next nodes जो कि हमारे पास जो है वो है हमारे पास L, M and O. Then I will again check whether क्या है कि हमारे पास कोई इसमें से गोल स्टेट है या नहीं है. So M is our goal state. So मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट इस तरफ मूव किया मैंने दोनों को, k की वैल्यू जो कि 2 है दोनों तरफ चला गया. So this is our goal state. So यहाँ पे मेरा एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, मैं जस्ट इसको मैं हॉल्ट कर दूंगा जो क्योंकि मेरे पास जो है वो गोल मुझे मिल गया है. So just look at the algorithm again, that all the successor of all k states are generated. If anyone is a goal state, the algorithm halts, otherwise it selects the k best successor from the list and repeats. So मैं just इसी एग्जांपल के साथ मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा फिर इस मैकेनिज्म को दोबारा फिर इसको मैं देख ले तो बता देता हूँ आपको कि किस तरह से ये जो है वो करती है कि सक्सेसर्स में से किस तरह से सिलेक्ट करती है. So just look at this example again, that I just change the heuristic values for some nodes. For example, f, the heuristic value for f is 9. In our previous example, the heuristic value of f was 7.1. So in the same way, the heuristic value for k is 6, and the heuristic values for k was in our previous example the 5.3. So I just change the heuristic values for some nodes. So मैं just इसको मैकेनिज्म को बताने के लिए कि किस तरह से जो है ना वो इसका नेक्स्ट स्टेट्स हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं. So I will initially I have the root node S. Then I will pick the next two nodes which are A and B. So both of these nodes I will check that whether it is a goal or not. If goal नहीं है, then I will generate the next childs. So then क्या है कि अब मैं I will pick the two best nodes. So just look at this point that the best two nodes क्या है हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास E है and C है और मैं क्या करूँगा, I will pick both of these two nodes. अब देखें कि ये जो पाथ इधर से आना था इसको पिक नहीं किया गया, क्योंकि क्या है कि वो इधर से पिक कर लेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो एक ही ब्रांच को इस तरह से लेके चला जाए किसी भी जगह पे. So ये यहाँ पे मेरे पास क्या है कि then I will pick these two nodes. जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन दोनों को पिक कर लिया. then E have no successors, तो यहाँ पे कोई successor नहीं है. then I will pick these two nodes. So just look at this point that I will visit the I and age in the same way. हमारे पास जो है वो then I will visit the node L and M. So M is our goal state. So just यहाँ पे मैं यहाँ पे हार्ड कर दूंगा. यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि इसका सक्सेसर नोड्स नहीं है, बट क्या है कि इसकी वैल्यूज जो है वो कम है. हो सकता है कि उसने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लिया और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या है कि उसका कैलकुलेट ह्यूरिस्टिक वैल्यूज तो कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन एक्चुअली उसका पाथ वहाँ पे कोई गिवन ना हो. दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल दैट एनी नोड हैव द ह्यूरिस्टिक वैल्यू बट द एक्चुअल पाथ जो है वो हमारे पास यहाँ पे ना हो. किसी भी नोड का ऐसी पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है. So just look at this slide that the stochastic beam search. So this is also a very important concept about the beam search. This is also a specialized form of a beam search, that instead of choosing the best k
best k nodes, or we can say that the best k successors. So instead of choosing the best k nodes from the pool of candidate successors, stochastic beam search chooses the successors at random. So ये हमारे पास क्या है कि ये भी बड़ा important concept है कि बजाय इसके कि हम क्या करें, just look at this point that क्या अभी तक हमने क्या किया था, we pick the best two nodes to traverse the next nodes, बजाय इसके कि हम best को pick करें. The stochastic beam search pick the candidate successors by using the random manner. So हम क्या करते हैं, वो randomly दो नंबर जनरेट कर लेते हैं. For example, the random number is 1 and random number is 5. At 1 it will pick this node, at for 5 it will pick this node. So हमारे पास stochastic beam search, once again just look at this slide, that the stochastic beam search, instead of choosing the best k nodes from the pool of candidates successors, stochastic beam search chooses the k successors at random. So randomly it will pick the k successors nodes जो कि हमारे पास pool के अंदर आती है. So till now we discussed about the concept of beam search, and we solved the examples by using this search technique. So I will suggest you this problem. So just look at this problem. I will suggest you कि इस problem को भी आप solve करें, खुद से solve करें. The problem is that we want to move from state A to G state. So A is our initial state, G our goal state. So the distance between A to D is 7, A to B is 11, A to C is 14. So these are the distances, so which are given over here. So here are the heuristic values. So the heuristic value for A is 40 and B is 32, C is 25. In the same way, the heuristic value for H is 10. So I will suggest you you should solve this problem. Initial state is our A and the goal state is G. So solve this problem by using these heuristic values. So the heuristic value is equal to the state line distance from that node to goal state. So हम इस तरह से by using the Euclidean distance we can calculate the heuristic values for these nodes. So मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले या नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो देखने से पहले आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें. So just look at this slide again, that there are three different types of local search technique: hill climbing, beam search, and we talked about the beam search technique in this video lecture. And the third type is genetic algorithm. Inshallah we will cover this algorithm in our next lecture. Just look at the basic points of this search technique, this algorithm, that it is inspired from biological evolution. So जिस तरह से हमारे जो है वो बायोलॉजी की एवोल्यूशन होती है, क्रोमोसोम्स की हमारे पास जो है वो चेंजेस आती हैं, तो इस जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर भी उसी तरह से हम चेंजेस वैल्यूज़ की करेंगे और नई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी स्टेट्स जो हैं उसको हम लेके आएंगे, अच्छी वैल्यूज़ को हम लेके आएंगे. So the second point is that we will find the approximate solution, as we discussed in our previous lecture, that the local search techniques try to get the approximate solution instead of finding the exact solution. So there are many problems for which we cannot find the exact solution. In the same way, जो है कोई बंदा जो है वो इंटरेस्टेड है हमारे पास जो सजेस्ट उसकी कह लें कि गोल के ऊपर, बजाय इसके फिर उसके पाथ को वो देखे, तो इट विल ट्राई. तो उस वक्त हम क्या करते हैं, लोकल सर्च टेक्निक करते हैं. सो द जेनेटिक एल्गोरिथम will find the approximate solution instead of finding the exact solution. The third point is that it is a variant of stochastic beam search. So just we talked about the stochastic beam search in our previous slides. So just look at this slide, that the stochastic beam search, instead of choosing the k best nodes from the pool of
candidate successor, this requesting beam search chooses the k successors at random. So randomly ये pick करती है k successor nodes को. So इंशाल्लाह क्या करेंगे, हम इस एल्गोरिथम को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, पर आई विल सजेस्ट यू कि आप क्या करें कि इसको देखें एक दफ़ा, ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो आप सुने तो आपके लिए ये जो टॉपिक है जेनेटिक एल्गोरिथम का ये इंटरेस्टिंग हो सके. So I hope you enjoy this video lecture. Thank you for watching this video. And if you have any question, you can send me an email. Inshallah, I will try my best to answer your question. Thank you for watching this video. Allah Hafiz.